जी ठीक हो गया। मैं होपफुल के जी आवाज सबको आ रही होगी, कोई इशू नहीं होगा। लास्ट टाइम अराउंड हमने नेहरू रिपोर्ट को देखा था 1928 की, और आज फिर कंपैरिजन बिटवीन नेहरू रिपोर्ट एंड 14 पॉइंट्स, इसको फिर हाईलाइट करें। लास्ट टाइम स्लाइड सेफ नहीं हुई थी भाई, तो देखते हैं जी। बिफोर स्टार्टिंग दिस कंपैरिजन, याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही फाइनलाइज हो गई थी, ठीक है जी। हाउएवर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कुछ ऑब्जेक्शंस थी, एंड फॉर दैट पर्पस जिन्ना ने एक ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका सेशन बुलाया, यानी नियरली ऑल मेजर एंड माइनर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, एंड ऑल दोज पार्टीज accepted 14 points of Jinnah to be added in Nehru Report. That Muslims of India will only accept Nehru Report once the 14 points are added. क्या हम नेहरू रिपोर्ट को उसी वक्त तस्लीम करेंगे जब 14 पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे। ये जनवरी 1929 में ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ, एंड फिर लेटर ऑन जिन्ना presented his 14 points before the Nehru committee. नेहरू कमेटी को फिर 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए जिन्होंने, एंड नेहरू कमेटी जिसने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी refused to accept 14 points. सो इस तरह एक डेडलॉक क्रिएट हो गया इंडिया में। क्योंकि फिर नेहरू रिपोर्ट को सिर्फ मुस्लिम्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इट वाज रिजेक्टेड बाय ऑल मुस्लिम ग्रुप्स इन इंडिया। So Nehru report lost its credibility that 25% Muslims in India
rejected Nehru Report because all major or minor political parties, they rejected Nehru Report. Simple. So now we're going to start the comparison. And 14 points. As far as the comparison is concerned, तो मेक श्योर के 14 पॉइंट्स काफी मुश्किल अंग्रेजी में, तो घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं. The very first comparison was related to form of government. Nehru Report wanted a unitary form of government, as we have discussed earlier. 14 points demanded federal form of government. What's the difference between a unitary and federal form of government? In a unitary form of government, central government enjoys more powers, and in a federal form of government, provinces enjoy more power. The most technical way one can say that in unitary form of government, residuary powers सवाबदीदी इख्तियारात are vested in central government. On the other hand, in a federal form of government, residuary powers are vested in provinces. So this is the first. Second comparison is related to provincial autonomy. In Nehru Report, as we have discussed earlier, that relative provincial autonomy was mentioned, while in 14 points, uniform provincial autonomy was mentioned. Relative provincial autonomy, that central government will decide the amount/level of autonomy to a province according to the role
जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। Second point was related to provincial autonomy. Nehru report में relative provincial autonomy, 14 point में uniform provincial autonomy. Relative provincial autonomy means that central government will decide the level of autonomy according to the role played by a province in India. सूबा जितना रोल प्ले करेगा, जैसा रोल प्ले करेगा, उसकी अकॉर्डिंगली उसको खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी किसी को कम किसी को ज्यादा। 14 पॉइंट्स में था कि इक्वल ऑटोनॉमी फॉर ऑल। देन थर्ड कंपैरिजन related to representation. Nehru report allocated 25% seats for Muslims in central legislature. On the contrary, 14 points demanded 33% seats for Muslims in central legislature. Nehru report provided Muslims with seats according to their population. But 14 points demanded seats more than population. The reason behind demanding more seats so that Muslims can effectively take part in lawmaking, because with 25% you cannot take effective part in lawmaking, because the rest of the assembly, 75%, can easily unite and amend constitution. Fourth, sent from Bombay. Nehru report, yes, we know it, that they accepted this demand, separation of Sindh from Bombay. But still in 14 points, Jinnah asked for immediate separation of Sindh from Bombay. Why is so? Because Jinnah believed that in Nehru report, when it was mentioned that a committee will be constituted, committee will inspect the financial conditions, then India's assembly will vote for the province, and then province will be formed. Jinnah believed that it's a time-taking process, and Congress will prolong this issue.
So we don't need to form a committee or stuff like that. Immediate separation. Because Jinnah believe that Congress will never accept it. और ये बस कमेटी चलती रहेगी और हमें हमारा सूबा नहीं मिलेगा. Jinnah was quite skeptical. Then reforms in NWFP and Balochistan. Nehru Report said okay, but still in 14 points, Jinnah mentioned reforms in NWFP and Balochistan on the same pattern as in other provinces. Why so? Because Nehru Report ने mention किया था पहले करेंगे हम basic reforms and then उसके बाद करेंगे political reforms. So यहाँ भी जिन्ना का ख्याल था कि ये इस बेसिक रिफॉर्म्स के इशू पर प्रोलॉन्ग करते जाएंगे कि जी अभी बेसिक हो गई रिफॉर्म्स, हेल्थ की, एजुकेशन की, अभी बेसिक रिफॉर्म्स, तो ये प्रोलॉन्ग करेंगे जी. सो हमें तो जल्द से जल्द अपने सूबों में रिफॉर्म्स चाहिए, जैसे कि अदर प्रोविंसेस लाइक बिहार, उड़ीसा, जैसे ये बने इनमें असेंबलीज भी बन गई. यहां तो नहीं कहा आपने कि पहले हेल्थ पे फोकस करो, एजुकेशन पे करो, बाद में असेंबलियां बनाएंगे, साथ ही बन गई. देन 6 representation according to population. Nehru Report said no. In provinces, there will be no seat adjustment on the basis of communities. कम्युनिटीज की बुनियाद पर कि हिंदुओं की सीटें, सिखों की सीटें, मुसलमानों की सीटें, ये सूबों में ऐसा नहीं होगा जी. सूबे ओपन इलेक्शन होंगे जी. जबकि 14 पॉइंट्स में अगेन जिन्ना डिमांडेड बंगाल एंड पंजाब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सीटें मुसलमानों के लिए. जिन्ना का ये ख्याल था कि बंगाल में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सीट्स होंगी तो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी, पंजाब में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी, सिंध अलहदा सूबा बन जाएगा, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी, NWFP में असेंबली बनेगी, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी, बलूचिस्तान में असेंबली बनेगी, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी. So there will going to be 12 provinces in India, and out of those 12 provinces, 5 provinces में मुस्लिम गवर्नमेंट्स बनेंगी, +1 आसाम का सूबा, उसमें भी मुसलमान 33% थे, तो यहाँ भी मुसलमान हुकूमत में आ जाएंगे. सो नियरली हाफ ऑफ इंडिया मुस्लिम जो है वो इस अवधि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे. एंड देन द लास्ट कंपैरिजन, joint versus separate electorates. Nehru Report was in favor of joint electorates, जबकि Jinnah favored separate electorates.
We have discussed the rationale behind joint electorates in the previous lecture. Why Jinnah demanded separate electorate? जिन्ना ने तो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में, अगर आपको याद हो, तो सेपरेट इलेक्टरेट्स को छोड़ दिया था कि अगर हमारी बाकी सारी डिमांड्स मान ली जाएं तो हम सेपरेट इलेक्टरेट्स को छोड़ देंगे. तो दोबारा फिर सेपरेट इलेक्टरेट क्यों? जिन्ना वाज ऑफ द व्यू दैट सेपरेट इलेक्टरेट्स की जो हमने सैक्रिफाइस मेंशन की थी दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में, वो थी उस फ्रेंचाइज सिस्टम में जो कि लिटरेरी इलेक्टरेट्स पर मबनी था. लेकिन अब नेहरू रिपोर्ट डिमांड कर रही है एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि ये जॉइंट इलेक्टरेट्स एडल्ट फ्रेंचाइज ये डिमांड कर रहे थे ना जी, तमाम बालिग, और करेंगे भी ज्वाइंट. तो उसमें तो फिर मुस्लिम्स की सीट्स, मुस्लिम की वोट का फर्क पड़ जाएगा. तो अगर एडल्ट फ्रेंचाइज लानी है तो हमारा सेपरेट इलेक्टरेट हम फिर लेंगे. हाँ, अगर आप लिटरेरी इलेक्टरेट, सिर्फ पढ़े लिखे लोग वोट करें, उस तक रहना चाहते हैं, तब हम छोड़ देंगे. लेकिन अब क्योंकि आप एडल्ट फ्रेंचाइज में आना चाह रहे हैं, तो अब नहीं हम छोड़ेंगे. These are the 7 main, you can say, comparisons between joint and separate electorates. Nehru and 14 points. In addition to these 7 points, there were a few other points as well